Frankly, when I started thinking about it, I've always been a little bit of a stage person. Actually, when I started writing, it's one of the first few things that I wrote, that how will I introduce myself on stage? And I wanted to build that image that I'm a mother who's starting this. I wanted that image. I'm sure there are a lot of hurtful comments also. इंस्टाग्राम पे आप अकाउंट को पब्लिक कर दो जैसे ना, वैसे ही आना कुछ ना कुछ शुरू हो जाएगा. तो जब मैंने पहला वीडियो निकाला ना, तो मैं बड़ी ऐसे ओवर कॉन्फिडेंट कि मैं तो ऐसे मम्मी साड़ी पहन के ऐसे कॉमेडी कर रही हूँ, मुझे कौन कोई ट्रोल करेगा. बट आया उसमें भी बहुत ट्रोल आ गया. इनिशियली तो आया कि ये बुढ़िया ऐसी लग रही है, क्या पहना हुआ है, ये आंटी जी कॉमेडी कर रही हैं, आपके हस्बैंड आपको परमिशन कैसे दे रहे हैं ये सब करने की. How do you keep yourself motivated to face all this and then next day to go up again on the stage and again make people laugh? बस आई थिंक वो होता है ना कि Hi Harpriya, welcome to Dil Dimag and Money. How are Hello. you doing today? I'm fine. Thank you so much, Charu, for having me here. I'm delighted to be here. Good to have you over here. I've been waiting for this moment because I've been, watching your YouTube videos and all the other clips which are going on super viral. So I'm so thrilled to have you over here, Thank with you. us today. My honor. So Harpriya, tell me one thing. You've broken all stereotypes, right? To start your comedy career at the onset of your fabulous 40s, right? That's number one. वो भी comedy में, which is, it seems to be funny, but it's a brutal career. Yeah, it is. You Thank know? you for saying that. Yes, it is. Putting yourself on the spotlight. So suddenly shifting from the mommy phase to being up there on the stage. How has it been for you? It's been great, fantastic. And I have to say that I'm super grateful, of course, because it's not easy. Like any other career option, it's not an easy option. Sabka ragda period hota hai. Mera bhi tha ragda Yeah. period. And thankfully, by the grace of God, things materialized and people liked my content, they liked my video, and things have worked well for me. So I am grateful, definitely. But of course, आसान कुछ भी नहीं है. Absolutely. And we live in a society where the numbers are very important, right? जी. Growing up, especially for the females, जी. वेट कितना है, हाँ. हाइट कितनी हाँ. है, कितना कमाते हो, इस एज तक शादी कर लो, इस एज तक बच्चे कर लो, इस एज तक ये कर लो. एंड गॉड फॉरबिडन इफ यू हैव पास दैट एज एंड यू नॉट टिक दैट बॉक्स, देन how it is. Absolutely. We are called out. Yeah. So for you to pursue this at 40, to pivot and to enter into this different world, how did you go about it? What was the inspiration behind it? मतलब suddenly तो you didn't get up and कि मुझे ये करना है आज, 2-3 चुटकुले सुनाने हैं सबको. I'm sure it's been a journey for you. Ji. Yes, see, frankly, when I started thinking about it, I've always been a little bit of a stage person. I've enjoyed doing, stage drama and, college वगैरह में वो होता है ना एक बच्चा जो कि एनुअल प्ले आ रहा है, किसको पार्ट लेना है. सो आई वाज दैट कि ऑलवेज हाथ खड़ा कर दो, कि स्टेज पे खड़ा कर दो, पेड़ वेड़ बना दो, कुछ भी बना दो. सो आई ऑलवेज लाइक एंजॉय बीइंग ऑन स्टेज. सो कहीं ना कहीं वो स्टेज का कीड़ा मेरे साथ चलता रहा. एंड इवन बीइंग अ फौजी वाइफ, यू गेट दैट अपॉर्चुनिटी इवन इन द फौज टू होस्ट अ लॉट ऑफ बिग फंक्शंस एंड do MC and all of that. Right. So I've been a part of this stage. So stage fear as such मुझ में नहीं था इतना ज़्यादा. I was happy to be there. And I enjoyed things like theatre and all thoda bahut also. Comedy, of course, I had no clue about what stand-up comedy was. वो Seinfeld बहुत 5 साल पहले जो आता था yeah. Star Plus पे, हम वही देखते थे. That is only the stand-up I Yeah. knew. Nothing else. बाकी कुछ भी नहीं. But बात वो था कि कुछ साल पहले around I think 2016, 17, 15, 16 जब ये Indian stand-up comedians थोड़े popular बहुत होने लगे, YouTube videos का बड़ा craze आया. तब देखने शुरू करे जब YouTube पे, तो मुझे बड़ा interesting medium ये लगा कि ये बड़े फनी है लोग. सो इट्स रियली फनी. एंड वी वर पोस्टेड इन गोवा. वहाँ पे कुछ लाइव शोज बहुत होते थे लोगों के. तो मैंने लाइव शोज देखने जब शुरू करे कुछ स्टैंड अप कॉमेडियंस के, तब मुझे थोड़ा थोड़ा कुछ वो दिमाग में कीड़ा आने लग गया कि ये एक कुछ है जो मैं ट्राई कर सकती हूँ. सो इट वॉज अ वेरी वाइल्ड थॉट. आई डिडंट नो दैट आई एम really going to do it. There was things at the back of my head. But one such show, it was an Amit Tandon show. Okay. Yeah, I had taken my parents to watch an Amit Tandon show. And हम देख कर वापस आ रहे थे. And तब भी मेरे दिमाग में से चला कि अमित टंडन is a clean comedian, you know, very funny and all of that. Family बहुत ही, मेरे parents तो really enjoyed the show. So जब वापस आ रहे थे,
तो मेरे ऐसे दिमाग में बस थॉट्स चल रहे थे कि इट्स सच अ ग्रेट मीडियम, ऐसा कुछ कर रहे थे. देन माय मॉम आउट ऑफ द ब्लू शी सेड, वैसे तू भी जब अच्छे मूड में होती है ना, ऐसे जोक वोक सुनाती है, तू भी ऐसे काम कर ही सकती है. So then I was like, okay, Very if she's also encouraging. thinking I it, know. तो that means कुछ तो है. हाँ. फिर मैंने थोड़ा I started reading up about it, just हाँ. you know, I discussed it with my husband. He was like, he dismissed me. I mean, dismissed me in the sense that he said, हाँ करो करो. He's never stopped me from doing anything. I've been into painting and all. But I think at that moment he must have just dismissed it कि ये इतने सारे जो कुछ करती रहती है उसी में से एक चीज इसका fad है, let her do it. He said, yeah, go ahead, don't worry, मेरे पे jokes बना ले जो मर्जी कर. So then I started to actually seriously find out about it, and then started the journey, writing a bit, hitting open mics. But yeah, ऐसे ही कुछ आया था. Wow, wonderful. But what was your family's first reaction to see you up on stage and doing this like professionally? Because हमारी families ही हमें seriously नहीं लेती. बाकी सब Oh, world है, yes. but उनको लगता है हाँ हाँ कुछ कर रहे हो. Yes, yes. you know? My husband went with me for my first open mic in Hyderabad. That was in Secunderabad में हमने करा था. So he was very encouraging. उसने बहुत ही गंदा वीडियो बनाया. खैर मैंने उसको बोला वीडियो बना ले ताकि मैं जाके देख लूँ. पता नहीं क्या फोन हिलता रहा. मैंने आज तक वो वीडियो नहीं देख पाई. But he was very encouraging. He took me. He said नहीं हैदराबाद में होते open mics. I'll take you and all of that. It was fun. See, my daughters saw it much later. उन्होंने मेरे देखे नहीं थे. Also because you know open mics में हर तरह का content होता है. So I didn't really want to take my daughters. So काफी अब मेरी बेटियों ने अब मेरा शो देखा है. So yes, they but होता है ना घर की मुर्गी. तो they are like yeah सब हंस रहे थे and all that. Like yeah mama please, some of the things you said are so cringy. So वो घर की मुर्गी वाला रिएक्शन है. सपोर्ट पूरा देते हैं, कोई मना नहीं करता, जो करना है करो. So वो सब luckily I'm in a family where you know my parents also you know supported all the girls in our family are extremely supported well. So कभी किसी ने नहीं बोला कि मत करो, ना मेरे इन-लॉज साइड से किसी ने बोला कि मत करो. तो वो सपोर्ट फुल ऑन है. बाकी क्या वो वाकई मेरे कॉमेडी के बारे में क्या सोचते हैं वो शायद मुझे पता चलेगा नहीं. And we Punjabis we have these forms of endearments है ना. हाँ कर ले कोई गाल नहीं है ना. हाँ. तो अब तो जोक मार दिया. मेरी मदर इन लॉ को बुरा लग रहा है तो I don't know. All I can say is I'm sorry. Things which I could not tell my mother-in-law, now I'm telling them openly on the world stage. Yeah, I always have that shield on front of me. ना say मम्मी ये ना actually generic jokes हमें बोलने पड़ते हैं जो society से relate हो. आपके बारे में नहीं है. Wow, Yeah. that's some journey. Yes. And also, you know, भी आपका जो latest show है, your जी. comic tour is called Carry On Mummy. That's right. And I love the title because I am also in my Carry On Mummy stage. Tell us more about it. Oh, you know, Carry On Mummy actually was the name of my first video that I released last year that went viral. And when I was thinking of titles, I just struck with this title because I was like, मम्मी एक ऐसी चीज है जो बस सारी उम्र बेचारी कैरी ऑन ही करती रहेगी. हर एक स्टेज से बच्चे पैदा कर, जब से वो बच्चे पैदा करती है तब से लेकर आई डोंट नो कब खत्म होती है. हमारी मम्मियाँ आज तक हमें झेल ही रही ना. हम अपनी आज भी लाइक आई एम इन माय 40s. इवन नाउ इफ आई हैव अ यू नो मूड स्विंग और आई एम इरिटेटेड, आई विल कॉल अप माय मम एंड से आई विल डू ऑल द चिड़चिड़. सो हमारी मम्मी भी आज तक हमें झेल रही है. सो आई थिंक मम्मीज एक ऐसी चीज है who have to carry on forever. So I thought this is the best title, Carry On Mummy. And that is what I decided to call my show also. It's all about you know all the eccentricities of a housewife and what we go through, our family life. It's just a fun, very family related show. And I love your one-liners on that tags, housewife, homemaker, है ना? Because you know the way you have used it. So वो कैसे आया दिमाग में? वो surprisingly वो मेरा पहला joke था where I said you know actually when I started writing, it's one of the first few things that I wrote, that how will I introduce myself on stage. You know, I wanted to build that image that I am a mother who's starting this. I wanted that image. It's not like I wanted to shy away from it. I wanted that to come out कि एक माँ और एक wife भी आके कुछ अलग कर रही है. या because you know my take was that there is a lot of comedy out there about wives and about children and but all of them are mostly from a father's point of view. There are a lot of comedians who are our age group, you know, in the 40s, but they are mostly men. Very few women comedians are in this age group, and if they are not really talking about marriage or whatever. So I wanted to firstly to bring out that mother's point of view and the housewife's point of view in a marriage, bringing up children, this Gen Z kids and all of that. So I really wanted that image to be out. So that's one of the first things I wrote, you know, cribbing exhausted, overworked housewife and mother.
So I was like, what are our roles? You know, I mean, like, yeah, now we're called homemakers, but what's changed? Yes. Nothing has changed. Just the word has changed, but our roles are still the same. What I mean, we may sound very modern. We may be trying to look very whatever, everything, but the roles are still the same back home. Yeah, and I often wonder, men have that luxury Yeah. in our society Yeah. to focus on anything Yeah. with that laser sharp focus. Yes. है ना? और women को probably इसीलिए God has made us a little bit more intelligent and more strong, because you can focus also with your half a brain. Other half is always there in the responsibilities of the house. Your kids Yes. have come home, have they eaten? आज guest आ रहे हैं, मैंने बिल्कुल. grocery करनी है. There's so much going on Yes. inside of us. So that whole aspect of us as a homemaker, as a housewife, that has always been overlooked. Yes, absolutely. And abhi dekho, what may have changed is that yes, a lot women are some women have gone to work and they they've started earning and all of that. But even for those women, there's a very tiny sect of women and homemakers जिनके घर में वाकई ही इतना सपोर्ट सिस्टम है कि वो घर आ रही हैं तो हस्बैंड वाइफ मियाँ बीवी मिलके खाने बना रहे हैं या मियाँ बीवी मिलके लॉन्ड्री कर रहे हैं, मियाँ बीवी सब मिलके सब कुछ कर रहे हैं. बट मोस्टली वो वर्किंग वुमेन भी घर आ रही हैं, वो भी होम मेकर फिर हैं, वो रोल उनका खत्म नहीं हुआ है. दे आर होम मेकर्स एंड एज वेल एज वर्किंग वुमेन. लाइक आई ऑलवेज से ऑल वुमेन आर वर्किंग वुमेन. Absolutely सम आर true. पेड, सम आर नॉट पेड. एंड जो बाहर जाके कमा रही हैं उनका भी काम कुछ कम नहीं हुआ है कि अब हम कमा रहे हैं तो अब हम घर में आके कम काम करेंगे. वो भी सब आके दे आर डूइंग द वर्क. So there's very tiny sect of society which has evolved so much that there's that equality in the home where the husband is also taking care of something or whatever, but mostly it's not. और वो सिर्फ हमें एड्स में दिखाई देता है. जी है जी ना, वो जी. मिलके कुछ काम कर रहे हैं, दाग अच्छे हैं, Yeah. हंसते हंसते आप कपड़े धो रहे हो, Yeah. वॉशिंग मशीन Yeah. को लोड कर रहे हो. Yeah. That is nothing Yeah. glamorous about it. It is just an everyday mundane and job. absolutely, and that is the reason, see, we have so much of women workforce which is leaving after they have children. Yes. I think India is one of the I was reading somewhere, I think one of the fifth largest or third largest countries जिसमें women workforce is depleting. Yes. And women who have the education and the talent and the vocational training and everything, they are not coming back to work after marriage or children. Yeah, no, So it's a very big problem. it's actually depleting. Yeah. And so it's very, so that speaks volumes about the fact that things have not changed as they look, Absolutely. yes. And I was reading on some website that there was a survey done of 143 countries or so. India ranks 126 on the happiness index. Oh my God. So this tells us the sad state of affairs. Yeah. So what we are, and tolerance towards women, Yeah. encouraging women to work. Even that mental health really- issues in women exactly. are rising. Yeah, absolutely. Yeah. Now, I feel humor is the best way to call out on really potent issues, negative issues also in the society. वो बोलते हैं ना, जोर का झटका हंसते हुए लगता है ना? So there are a lot of things you cannot really talk with lot of comfort, but humor brings out that aspect of it, and you have used it in your shows. So how did you think of interweaving all these societal issues into your humor? See, that is the only thing, in fact, I wanted to talk about. When I started writing my jokes, I was looking at, what can I say which is a little different from others. And this is the gap I kind of identified at that time, at least, in the Indian comedy scenes, if I can say. That the gap was that we don't have the women perspective, the homemaker, housewife, mother's perspective about family life, about bringing up children, about all of this thing. So that, I thought there was a gap, and I thought that is a gap that can really be addressed. I thought, I tried to build a niche around that, because I was like, ये बातें कहनी बहुत ज़रूरी हैं, because कोई नहीं कह रहा है. And there is so much. I mean, we can be, irritable, which we are a lot of times, whatever happens. But
I thought why not when हमारे women के साथ क्या होता है ना कि the moment somebody says it, all the other the flock just comes around and everybody comes, अरे यार ये तो मेरे साथ भी यही होता है. हाँ. So the moment that relatability comes, हाँ. and if it comes through humor, Yeah. I think you're giving that little moment of joy and making women feel that we are all in this together. Yeah. We all are kind of going through our phases together, and yes, I'm going through, my neighbors going through, my mother's going through, everybody's going through these phases together. So I think थोड़ा सा कहीं ना कहीं हम वो जो stress है उसको उसी से थोड़ा कम कर सकते हैं. Oh, So sure. मुझे मेरा ये था कि चलो let me try and take away that little stress from women, and if I can, even for a moment, for 1 minute, for 2 minutes, कोई reel देखकर खुश हो जाए कि यार मेरे भी घर में ये होता है. No, which it does, because I have watched so much of your content and it's absolutely relatable. कई बार तो मेरा मन करता है कि मैं इसमें आपका ना forward कर दूँ सब जगह, अपनी you. family में, अपने बच्चों में, wherever that now you know that your mother is not the alone. only one. Yeah, You know, you get to hear all these things that you're too sensitive, mama. Yeah. Everything you take to Yeah, heart. And yeah. I'm like, okay, watch this. It's हाँ. like, a room full of 50 other women. Yes. They are also feeling absolutely, the same thing. Absolutely, Yeah. absolutely. But now in your audience, you have Gen Z watching Ji. your shows. Ji. You have elderly women, men, people from all age groups. So how do you address that? Because not everybody's brand of humor is the same. मेरी तो daughter को मेरे jokes ही नहीं समझ में आते, and honestly I can't understand her jokes either. Yeah, I can't so understand how my do daughters. you adapt yourself to cater to all brands of humor? Yes, it's very interesting. See, when you start getting on stage, when I started doing the entire Carry On Mummy 1 hour show, I had that little hitch in me also. मुझे ये था कि मतलब I was like चलो अभी तो शुरू करा है तो let's just go get on stage and take it as it comes. But initially I felt that maybe only women will come to my show, or maybe couples will come to my show. But now in the last 1 year, it is such a beautiful thing when I see that there's a family where there are grandparents, the husband, wife, and their teenage children, and there's a 3 generation of people who have come to see my show. And the most beautiful compliment is when after the show वो तीनों generation आपको आके compliment करे, जहाँ पे teenage बच्चे ने, और एक अभी recently हुआ जहाँ पे एक ऐसी एक परिवार था जिसमें वो जो teenage बच्चे थे, they came and asked me, auntie, can we take your contact because we would like to call you at our college for a college festival. So I was like very happy. जो senior citizens थे उन्होंने कहा बेटा तुम हमारी ना veterans meet में आके करना perform. And जो of course जो मेरे age group के थे वो भी बड़े खुश थे. So I was like, that was like the biggest compliment for me, that if I have connected dots with 3 generations and all 3 generations were able to relate to my sense of humor, and which goes on to say that कुछ बदला नहीं है. उनके हमारे माँ बाप के टाइम से जो हमको the way they brought us up, the way we are trying to bring up our children, the way children are reacting to things, generational gap, वो क्या होता है, communication gap, all of this. हम भी अपने माँ बाप को बोलते रहते थे आपको समझ नहीं आ रहा, आपको समझ नहीं आ रहा, आपको नहीं पता. अब हमारे बच्चे हमें वही चीजें बोल रहे हैं. So हो सब वही रहा है, and it's amazing that how they all connected. So ये अपने आप ही हो गया, मैंने इसके लिए कुछ करा नहीं. No, that you are very humble of you, very modest not to take that compliment. I'm just grateful कि ये connect हो गया. It is a big challenge. I agree with you, because you can otherwise just get very niche with the audience कि सिर्फ ladies ही ना आए, सिर्फ वही age group ना आए. Of course, I will not attract ये नहीं है कि मेरे शो में भर भर के कोई टीनेज बच्चे आ रहे हैं, मगर जब थोड़े बहुत भी जो आते हैं मुझे बड़ा मजा आता है कि वो खुश होके जाते हैं. So that is the main thing, that कहीं ना कहीं वो connect हो रहा है. But there's this other side of comedy also, especially जो stand-up comedy है, to be under the spotlight. जी. Because आपको instant feedback मिलता है. Of course. Right? और ज़रूरी नहीं है कि all the time your jokes will work. Sometimes they can fall flat also. Oh, but they do. To have that straight face or funny face and to really take that in, you have to read the room, you have to improvise, and you also do a lot of crowd work. You interact with your audience. Yeah. So is that a skill set which you had to develop, or does it come naturally to you? थोड़ा बहुत natural होता है, but definitely you have to keep developing, and like you're saying वो आप improve करते रहते हो उसको अपने आप को, you're like on the job. You are trying to learn it every day, because the beauty about stand-up comedy is that every show is different. I cannot go back home and say अच्छा ये 2 show तो exactly same थे, हो ही नहीं सकता. Different audience, even your own delivery of the jokes changes every time. वो joke जो मैंने
20 बार 50 बार कर भी लिया, तब भी उस जोक की डिलीवरी हर वक्त वो थोड़ा बहुत पॉज, थोड़ा बहुत ये कुछ बदलेगा. एंड यू आर राइट, हर बार रिएक्शंस, कई जोक्स हैं जिस पे हर बार मुझे बहुत अच्छा रिएक्शन मिलते हैं, लेकिन और कई जोक्स हैं जिस पे ठीक है मुझे पता है कि इस पे थोड़ा मिड है, इट्स बिल्डिंग अप, वो व्हाटएवर, बट कई बार वो मिड वाले को बहुत हंसी मिल जाती है और जो पंच लाइन पे मुझे एक्सपेक्टेड था कि बहुत हंसी आएगी उस पे हंसी नहीं आती. तो फिर देन यूर अ लिटिल यू टेक अ बैक, देन यू हैव टू काइंड ऑफ क्विकली इन योर माइंड रोल बैक एंड यू नो कि अच्छा बिल्ड इट अप. बट या समटाइम्स नथिंग वर्क्स. ऐसे भी बहुत से ह्यूमिलेटिंग शोज हो जाते हैं. ये बिल्कुल ऐसा मीडियम है कि आप स्टेज पे जब हो उस वक्त आपको instantly, like you're saying, it is instant, the validation. This one was, you killed it here or you bombed here. So you know it right that moment. So some shows, I wouldn't say the entire show, but yeah, there are parts where you are just not able to get the audience back on track. It may be anything. Abhi you can't blame the audience. They are here to laugh. As a comedian, it's my job कि जैसा भी audience है, I have to make them laugh. So maybe फिर मैं जाके यू कॉन्टम्पलेट कि यार मे बी इसमें मैंने डिलीवरी ठीक नहीं करी, व्हाट कैन आई इम्प्रूव, व्हाट कैन आई डू, ऐसे में मैं क्या बैकअप कर सकती हूँ. सो यू कंटिन्यूसली ट्राइंग टू इम्प्रूव योर स्किल सेट एंड इट्स अ जॉब. आई थिंक लाइक हर नौकरी में अगर आप नहीं करोगे तो आप स्टैग्नेट हो जाओगे. तो इसमें भी आपको कंटिन्यूसली अपने ही उससे अपने शोज़ को वॉइस रिकॉर्ड करके आप घर जाके दोबारा सुनते हो कि कहाँ ठीक था, कहाँ नहीं था, लाफ कहाँ आया, कहाँ लाफ नहीं आया. वो कंटिन्यूस आप उस पर काम करते रहते हो और जितना आप उसको करोगे उतना ही हुनर आपका फाइन होता जाएगा. मतलब योर फिनिश विल कीप कमिंग. दैट इज द ओनली वे. लॉट ऑफ हार्ड वर्क. हाँ बिल्कुल. काम तो हर जॉब के प्रकार है. योर ओन मटेरियल, ऑलवेज बी इन स्टेप विद द टाइम्स. आसपास क्या हो रहा है उनको अपने जोक्स में बिल्ड अप करना. जी. सो इट्स कांस्टेंट वर्क इन प्रोग्रेस. यस, क्राउड वर्क इज इंटरेस्टिंग टू. मतलब उसमें यू हैव टू जज द ऑडियंस. अगर आपको लग रहा है कि ये क्राउड वर्क वाला ऑडियंस है जो एंजॉय कर लेगा तो ठीक है. कभी कभी होता है आप कोशिश करते हो लेकिन वो ऑडियंस बड़ा ऐसे बैठा होता है कि हंसा के दिखाओ. हम तो come there to challenge you, है ना? हम तो आपको मतलब देख लेंगे टाइप ऑफ थिंग. सो आप कई बार बहुत स्टिफ होता है. एंड आई एम नॉट सेइंग देयर इज नो जेंडर टू दैट थिंग कि कोई मेन मुझे ऐसे कोई देख रहे हैं. कई बार औरतें भी बस ऐसे बैठी होती है कि क्या ही है ये आंटी. तो उसमें कुछ नहीं है. सो आप you try to warm them up and everything and talk to them or something, but some people just are not willing to. So then you have to just, okay fine, then you have to ignore that lot and just move to the other lot who's enjoying your show. No, मेरे को ना बड़ा ये फील आ रही है एक जॉइंट फैमिली की. जी, ओहो बिल्कुल है. you're right, because as a female growing up in a joint family somewhere ना हमें ये ट्रोलिंग की आदत पड़ जाती है ना. And not only growing up in a joint family but all the aspects of our society. बिल्कुल. बड़े होते हो तो कोई ना कोई तो टोकता रहता है. बिल्कुल. ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना, especially for females, right? एल्डर्स को जवाब नहीं देना, सह लो, ये कर लो. फिर बच्चे ट्रोल करना शुरू कर देते हैं. लाइक इफ आई हैव टू गो आउट समवेयर एंड आई गेट रेडी, माय डॉटर विल स्कैन मी फ्रॉम हेड टू टो एंड शी विल बी लाइक, PTM के लिए, oh my god, don't get me started on that. मुझे लगता है कि जैसे मैं पता नहीं कहाँ किस सेरेमनी में जा रही हूँ, that all the eyes are only going to be on me. I know. And you never get that feeling of approval. It is always like यार कुछ तो चेंज कर लो, बाल ठीक कर लो, ये ठीक कर लो. मैं कह रही बेटा नंबर तेरे मिलने वहाँ पे, मेरे को कोई नंबर नहीं दे रहा वहाँ पे. Yeah. But trolling is a big issue, even on social media. Big time, right? very big, very big. So along with all the accolades, I'm sure there are a lot of hurtful comments also. Yes. How do you take all of that? See, the moment you get into this any public eye, and I think not just public eye, Instagram पे आप account को public कर दो जैसे ना, वैसे ही आना कुछ ना कुछ शुरू हो जाएगा. तो है मतलब honestly, of course, everybody want me and I knew कि भाई आएगा कुछ ना कुछ, but I did not expected. मेरे को जब मैंने पहला वीडियो निकाला ना तो मैं बड़ी ऐसे ओवर कॉन्फिडेंट कि मैं तो ऐसे मम्मी साड़ी पहन के ऐसे कॉमेडी कर रही हूँ, मुझे कौन कोई ट्रोल करेगा. बट आया उसमें भी बहुत ट्रोल आ गया, थोड़ा बहुत आया उसमें भी. इनिशियली तो आया कि ये बुढ़िया ऐसी लग रही है, क्या पहना हुआ है, ये आंटी जी कॉमेडी कर रही हैं, अपने बच्चे संभालो, ये क्या कर रही हो, रोटी बनती नहीं होगी तुमसे, ये क्या कर रही हो. all that, everything happens कि आपके हस्बैंड आपको परमिशन कैसे दे रहे हैं ये सब करने की. और वो सब चलो ठीक है, दैट इज़ वन लेवल. हंसना था क्या, फनी नहीं था, and that also is okay. And we comics, we joke around ki firstly any comedian gets trolls, all comedians get trolls. Women comedian
you have to take it with a pinch of salt, और भी ज़्यादा आएगा कि women can't be funny, वो वाला सबसे favorite होता है सबका, women are not funny, one more woman who is not funny at all, वो सब बहुत आता है. तो that is also tolerable, it is okay, you just ignore कि क्या ही कर सकते हो. बट जब मैंने अपना सेकेंड वीडियो निकाला, जिसके बारे में बहुत लोगों को पता नहीं, क्योंकि वो वीडियो ज़्यादा चला नहीं, एंड इट्स कॉल्ड एवरी डे इज मेंस डे, एंड दैट वीडियो वाज टॉकिंग अ लिटिल बिट अबाउट Men's Day and in general how we women how girls are looking for boys, what kind of guys, all तो उसमें मर्द बहुत offend हो गए. Let's just put it like that. easiest job in the world है ना for men to just get बहुत offend हो गए. and मेरे सोच से बहुत, क्योंकि वो जोक्स तो वही थे जो मैं बहुत लाइव शोज पे कर चुकी हूँ, बहुत बार कर चुकी हूँ, बहुत बार, नॉट जस्ट लेडीज के साथ, women, बंदे, मतलब हर men are also there and people have enjoyed the jokes, people have come and told me, oh मैम आपने हमें रोस्ट कर दिया, but we had fun and whatever. ऐसा कुछ कभी ऐसे मुझे किसी ने लाइव शो में कभी नहीं बोला कि ये वाले आपके जोक्स बड़े ऑफेंसिव थे या हमें अच्छे नहीं लगे whatever. तो I never even imagined, but when I put it on YouTube, oh my God, it went to another level of trolls. On Instagram, it went to another level of trolls, to the extent that I had to actually block the comments on one of my reels. And वो ऐसे loyal किस्म के trolls थे जो दूसरी वाली reel पर गए थे, आपने उसका comment section क्यों बंद करा है? तो मैंने कहा भाई तू यहाँ कर ले, अपनी भड़ास निकाल ले तू, कोई बात नहीं. वो, और फिर उसमें फिर बहुत नेक्स्ट लेवल हो गया था. इट वाज लाइक इट वेंट टू रेप, इट वेंट टू हाँ, it things like this came that if I had a wife like you, I would burn her alive. It's yeah, somebody said ऐसी औरतों के लिए सती प्रथा आज भी होनी चाहिए. It went to that and it went to worse. I'm not saying it here, but it went to worse things, okay? And that got me, I mean it's easy to say कि ignore, पढ़ो मत. अब पढ़ते आप हो क्योंकि वो आ रहा है ना, तो whatever. तो वो आया, so वो पढ़ लिया. I was affected by it and it didn't bother me कि वीडियो नहीं चल रहा. That is okay. कोई वीडियो चलता है, कोई वीडियो नहीं चलता है. Of course, you get affected, but not to that level. What was affecting me कि इतना क्या बुरा है कि तुम मेरी जान ही लेने पर आए हुए हो कि मतलब ये हो जाएगा, वो आप ऐसी औरतें ये क्यों आ रही हैं. And imagine the mentality of such people. अगर वो किसी unknown person को who's trying to do her job को troll कर सकते हैं, तो in their real and life all how sorts they of must abusive be. language was there, everything was there, anything worse you can think of was there, whether it was galiyan, whether it was calling me names, whether it was doing whatever, everything, okay. सब कुछ था. तो उसमें फिर that then I got a bit like it was getting to me. So then finally I reached for help to the cyber crime cell, and मैंने थोड़ा एक complaint भी डाला. फिर इंटरनेट पे कुछ ऐसे लोग हैं जो help करते हैं, cyber crime experts हैं, so I उनके पास मैं गई. तो उन्होंने उनको ट्रैक करके ब्लॉक भी करा, मैंने उनको ब्लॉक करा, उन्होंने ट्रैक करा, उनको वार्निंग्स भेजी. एंड आई थिंक देयर आर सम लेवल ऑफ ट्रैक ब्लॉकिंग वेयर आई थिंक दे गेट ब्लॉक्ड फ्रॉम एंटायर सोशल मीडिया. सो आई कंप्लेंट, मैंने मतलब डाला उन सब के लिए, विच इज़ गुड. एंड वो फिर थोड़ा कम हुआ, बिकॉज कई तो मतलब ऐसे थे, फिर वो डीएम में आके डल रहे. फिर वो होता है ना कि ट्रोल्स में सम वुमेन आर सपोर्टिंग यू, तो वो उनके लिए उनको लड़ रही है कि तुम ऐसे बोल रहे हो. देन दोस वुमेन सारे डीएमिंग की तो हमारे भी पीछे पड़ गए. मैं क्या, बट जस्ट स्टॉप इट, डोंट डील विद द गाय. Okay, but like social media, like this is a separate universe. Yeah, it's a separate universe. लोग जानते नहीं एक दूसरे को, एक दूसरे की कमेंट्स पे लगे हुए हैं. उनके वही होता है, 0 फॉलोअर, 0 वो कुछ नहीं है. So वो ठीक है जो भी है, but sometimes it's just too, because everybody is reading it and क्यों? It doesn't bother me like that. Like वो एक रिचा चड्डा ने एक बड़ा फेमस कुछ कहा था ना, उनको किसी ने पूछा किसी इंटरव्यू में कि आपको क्या लगता है उनके बारे में, ऐसा कमेंट करा, कुछ करा. But that kind of बोलते हैं ना, what doesn't kill you makes you stronger. Yeah. तो strong bone को भी वो develop होने में टाइम लगता है. It's not easy. It takes a toll on you. Sometimes mentally you get affected. मतलब कुछ दिन ऐसे थे कि मुझे रात को ऐसे नींद नहीं आ रही थी, कि मुझे बड़ा ईरी मतलब गंदी फीलिंग हो रही थी कि लोग आपको एज अ कॉमेडियन हंसता हुआ देखते हैं, तो उनको दिमाग में इमेज होती है यार ये घर में भी ऐसे ही है, ऐसे हंसते रहते हैं. बट द थिंग इज दैट you go through your anxieties, you go through your feelings, so how do you keep yourself motivated to face all this and then next day to go up again on the stage and again make people laugh? बस आई थिंक वो होता है ना कि मंडे को सुबह नौकरी करने जाना है तो जाना है. तो आई थिंक अल्टीमेटली बॉस की गाली सुनो, ये भी करो, तो अल्टीमेटली हाल वही है.
even in when you're it's easy to say कि जब आप अपना काम कर रहे हो तो आप अपने पेस पे उठोगे, अपने पेस पे डालोगे, वो ठीक है. We do have that convenience when you're doing something on your own. But at the end of the day, उसमें भी if you want to achieve something, if you have a goal in mind, if you have a tour to go to, if you have shows that you have booked, you have to go there. Yeah. So you have to forget everything and you have to just get your act straight and freshen up yourself, whatever. कुछ भी light hearted को TV देख के चले जाओ, कुछ कर लो, whatever. मेरे पास डॉगी है, उसके साथ खेल खुल लो. But yeah, simple things. But you have to get your act together and just be there. And at the end of the day, I always feel, look at the bigger picture. Yeah. Yes, they do affect you mentally. All these very bad kind of trolls do sometimes take a toll on you, do affect you. But then again, you have to look at the bigger picture, that what's my goal in the bigger picture. Do these guys matter? No, they don't. यो यहीं के यहीं रह जाएंगे, whether I'm able to report them, not able to report them, whatever. But वो कितना मुझे follow कर लेंगे, does it really matter? No. और उससे कहीं ज़्यादा हैं जो मुझे appreciate कर रहे हैं. You know, so I have to be grateful for that. So I have to always look at the bigger picture कि okay, fine, this is a part of the package. It will come, but I have to learn to just keep filtering it out. Yeah. Because I have to remember that a lot more people are appreciating my work and I have to keep going for them. And I feel that any creative Yeah. job where you are just putting yourself Yeah. out there, you are Yeah. expressing yourself, Yeah. you'll never be able to satisfy everyone. Yeah. But you still have to keep marching to the beat of your own heart. हाँ. और जो आपको ठीक लगता है आपको हाँ, करो. अपना वो करना तो खुद ही पड़ता है.